Ji, Assalamu alaikum. This is Bakar Beg from Electrical Engineering Department, National University of Computer and Emerging Sciences, which is also known as FAST, Electrical Engineering Department, Chenniyot, Faisalabad campus. Yes, it is. It is in Faisalabad and nearby Chenniyot as well. So we say it together like Chenniyot, Faisalabad campus. Although FAST has campuses in other cities as well, but we are here today to give you information, to answer your queries, and you will have the chance to know about the faculty and facilities, and also career you can join after getting the degree from electrical engineering department. We have also some new programs of being offered first time in Pakistan as well in our department, and this electrical engineering department, we had our first session, we inducted in 2014, and then it started, and we have like 3 batches passed out almost. And we will go towards our participants, which Dr. Mohammad Gufran, who is live with us. He is head of department of electrical engineering department, and Dr. Adil Zulfikar, and also Dr. Mohammad Shoaib Khalid. So I think before going further and giving you details and answering your queries, I would like that you should see a short video about our department, and it's very interesting video which will give you a brief overview. But yeah, the main overview is on the website, and you can come and visit us as well in the department. Please play the video. Okay. Have you counted the labs? I know that there were so many that you must have not counted the labs. There are almost 16 labs. And yes, this is a huge number in our electrical engineering department.
because an engineer is not just a theoretical engineer, he must be skillful in this current era. So these labs enable our engineers to become excel in their fields. So when they join and go and join the industry, they must not feel that they are coming from a university. They must feel that they're coming from one job place to another. So let's start with our participants who are here to give you information and introduction. So I will ask first our head of department, Dr. Muhammad Gufran, to give a brief introduction and also a brief history of our department. Yes, Gufran. I think, sir, you are mute, please. Okay. Thank you, Kar. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to introduce myself. I'm a head of electrical engineering department at FAST School of Electrical Engineering, Chennai Faisalabad campus since 2017. I joined FAST in 2013 as assistant professor, and in 2014 we started the first program in electrical engineering, which is a BS Electrical Engineering program. In 2015, we moved towards graduate programs and started MS in electrical engineering. And recently, we have also got NOC from Higher Education Commission to start PhD in electrical engineering program. So inshallah, we will be starting this program from fall 2021, the PhD program. So as far as the BS Electrical Engineering program is concerned, we are running this program since 2014, and we have graduated so far. 3 sessions have graduated so far. We are offering computer engineering, electronics engineering, and power engineering streams as the specialization in the BS Electrical Engineering program. So our students usually study together in the first 2 years, and in the 3rd year, they have to select one of the specialization streams. So we give the students the option to select the specialization according to their preferences and interests. So almost like 30 to 40% students go for power engineering streams, and then around 30-40% students choose for computer engineering streams. And then we have around 20 to 25% going for electronics engineering. We have well-equipped labs at the department, as you have just seen in the video. We are offering state-of-the-art courses which are related to the industry requirements. We are also offering, these MS specialization streams in which we are offering communication stream and a power stream. MS is a research-oriented degree. The student also need to go for a thesis of their specialization. So we have 5 PhD faculty members in the department, so who are conducting research at the very cutting-edge research, and they have these funded projects as well. So the students are involved in those projects for the master thesis. So now, because we are starting for the PhD electrical engineering program, so it will definitely strengthen our our research programs at the department. So I am looking forward to have the new programs as well, which are we are offering the 2 programs which are non-engineering programs. One of these programs is BS Robotics, and the other one is BS Internet of Things. So we have identified that these 2 programs have the very futuristic programs, the innovation and the 4th industrial revolution is based on mainly the robotics, Internet of Things, cloud computing. So we have identified that we must start these programs so that we can compete with the international community. There is a shortage of the people who have the skills in the areas of robotics, automation, and Internet of Things. So we want to fill that gap. There is a huge job market, I think, available. There is a skill gap, so we want to fill that gap, because the field of robotics
and field of Internet of Things. The both of these fields are very much related to electronics engineering, and there is also overlap between the robotics and other fields like mechanical engineering, and also the computer engineering and computer science. So we will be having this cross-disciplinary program in which the faculty members from other departments will also teach in these programs. So I'm very hopeful that these two programs will be a great addition in the department. Thank you so much, Dr. Gufran. As you have listened, that there are electrical engineering program with the skill set available for you with huge labs and also faculty, and also you can hear that we have two new programs going to launch soon in this fall, which you can apply now as well. The deadline is 30th June, just to make it sure that you should apply on time. BS IoT, Internet of the Things. Do search it on Google. What is IoT? I hope we will also let you know, and also BS Robotics. And let me go forward and towards Dr. Adil Zulfikar. Dr. Adil, I want to ask you that would you like to explain about what kind of accreditation we have currently in electrical engineering department? Our engineers are recognized, and also by which authority? And also, what about the about the environment in the electrical engineering department? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. I hope you can hear me. My name is Dr. Adil Zulfikar. I have joined FAST CFD campus in January 2020. So actually, we, as Dr. Gufran, head of Department of Electrical Engineering, told you that we offering 3 streams in electrical engineering. First one is power, second one is electronic, and third one is computer engineering. So our program basically electrical engineering CFD has at CFD campus has got PC level 2, which is also called Washington Accord accreditation. It means our engineers can apply different jobs like in Australia, Canada, USA without any qualifying exam, and our engineers will be recognized globally. So I think this is the first campus in surroundings that got PC level 2 accreditation right now. And the second is, as the head of department told you, that we are also offering 2 more programs, which is the need of today's era, which is robotics, BS in robotics and BS in Internet of Things. So those programs are also very demanding nowadays, and we also hoping that we get accreditation from higher authorities for these programs very soon. Yes, please, Fakar Beg. Anything else? Yes, thank you so much, Dr. Adil, for explaining our programs are recognized by Pakistan Engineering Council and also level 2. Which is the current accreditation PEC is giving, and due to this, this Washington Accord is not just about. Believe me, everyone is saying that this is just about the jobs, but believe me, it's itself a system which is making the program more quality. It's increasing the quality of the engineering program. So, like we have implemented this system in our department, and like quality of our engineers have increased due to this system. So, going forward, I will ask Dr. Shoaib Khalid to introduce himself and tell about his teaching experiences, and also about what are the research going on in our department, and what are the opportunities for the students who do like your field is, I know it's power engineering. So what students have the opportunity to have the jobs in this field in Pakistan? Dr. Chip, you are mute. In electrical engineering. Yeah, sorry. Yeah, it's okay now.
Thank you. I'm Dr. Shweb. I did PhD in electrical engineering with power, and as far as the departmental research is concerned, we are doing research in the area of the renewable energy. We are doing research in the area of robotics. We are doing research in the area of machine learning, and all the fields are like combined at a stage. Like there are different projects, and when there is a project, we have to deliver that projects to the funding agencies like HECs, like USAID, like Asian Development Bank, World Bank. So these projects are actually funded by these agencies, and our faculty is doing that research and delivering that projects to the Higher Education Commission. So as far as the area of renewable energy is concerned, we have the facilities for the solar. We have a running solar power plant of 240 kilowatt, and students are researching on that plant also. So, moreover, FAST has the infrastructure, a great infrastructure for the research, like for about 225 million rupees funded in the last 5 years to the FAST. So we have like flagship conferences, and these facilities are available for the graduate students, for the PhD, for the masters. Also, the undergraduate students will be the part of the research. Thank you. Thank you so much, Thank you, Dr. Kar. Shiv, for yes. Thank you so much, Dr. Shiv, for explaining the research in our campus. Now, coming to the questions, more kind of admission questions. I would like to ask Dr. Gufran that what is the criteria for getting admission in our three programs: bachelor's in electrical engineering, IoT, and robotics? Or like which students can apply in these programs, and what is the criteria for that? For admission in BS Electrical Engineering and BS Robotics and BS IoT, the criteria is same for the three programs. A student requires at least 60% marks in their metric and or equivalent examination like O levels. And student should also have studied for the HSSC or which is also called FSC exam, pre-engineering or equivalent qualification for at least 2 years. Okay, we understand that due to pandemic, it was some of the exams have not held. So we will be accepting the applications from the students, even if they have completed the metric examination with 60% marks, and their examinations for first year or second year are not held. They can still apply. And students also need to have at least 60% marks in their pre-engineering or the equivalent exam, like A levels. So for the A levels, they need to get the equivalence certificates. For the this is the eligibility criteria. Then there will also be a test conducted by FAST. So for the test, the students need to get good grades. So there will be 50% weightage given to the admission test of the FAST, and the 50% weightage will be given to the to SSC examination or HHSC, whichever is the higher one. Either it's a metric or it's a first year or second year. So together the 2 years of FSC. So the highest percentage will be considered. So the merit will be jointly with the test and also with the grades obtained in the latest exam. Students can also take the NTS exam. We can also accept that exam for the students, and also the SAT exam. Some students take the SAT exam. That is also acceptable. SAT 1 or SAT 2. So this is the criteria. Thank you so much, Dr. Gufran.
for telling the students about the admission criteria in 3 programs which we are offering. And you have listened, you have so many options. You can take the fast test, or also if you have taken some international exam, then still you can apply. And also if you are there are no exams, you can apply for the fast will give you admission, and you can submit your results later when you will get them after taking the exam. But yes, it is the right time to decide for your future, because I know that after matric or O levels, you were so fast to take admission, taking preparation, for like FSC. Now it is again the same time, and the deadline is 30th June. So about the job options, first I would like to explain myself that if our engineers, which are now our alumni, I must say, alumni who are doing jobs in different industries. And the reason for these robotics field, it is not just about robots. The robots are like machines which are working in industry, like the recent Hyundai industry, which has been like some kilometers away from us, from our campus. And Faisalabad, the industrial state, is quite famous, and it's progressing. We are sitting in the industrial hub. So we are now working. We are already working, and we are working. We have the plan to work in future as well for the industrial problems, to address them, to work for them. And that's why we need you. We need you uh, to train you for this industry, which is robotics, Internet of the Things, and electrical engineering, which has like computer engineering, power engineering, electronics engineering. And our engineers are doing job in every area, like they are doing jobs in embedded system software houses, in computer software houses, in industry like Hyundai, or some textile industry. They are working in other areas as well. So there are a lot of fields for you if you graduate from electrical engineering, and also in among them 3 majors like computer engineering or electronics engineering, and power. So you will have a lot of. If someone of you wants to further explain about the job areas which our graduates, our future engineers can join after graduating, uh, can also say, please. Yes, Dr. Adit. Yes, Karbek, can you repeat the question, please? Yeah. Actually, there are a variety. Yes, please. Yes, what about the job areas our graduates can join after doing degree, especially in new areas, BS IoT, BS robotics? Yes, Garbik, thank you so much for your question. As far as BS Robotics concerned, being a student of BS Robotics program, the students may find employment opportunities in a lot of areas, such as industrial automation. As you have already mentioned, Hyundai, the plant is established near our campus. And the student can also find job in agricultural area and manufacturing, and aerospace and healthcare, and student can also find job in a defense area basically. So apart from these areas, students may work in engineering fields as a robotics engineer, as a control engineers, and automation engineers, robotics specialists, and automation systems engineers as well. Graduates may work in the traditional engineering fields as mechanical systems engineers, or electronic systems engineers, and control hardware, software, and designer engineers. So, apart from these technical areas, students may also choose to pursue their further academic study in the fields related to manufacturing, related to robotics, control systems, or other areas of mechanical or electrical engineering. Yes, Fakar Beg.
Thank you so much, Dr. Adil, for reviewing these areas. So our students can now get the idea that their world is open for them, and they can choose, because field are merging and electrical engineers are merging everywhere with the computer, with power, and electronics, and Internet of the Things, more advanced, and robotics as well. So coming more forward, I would like to ask Dr. Shoaib that what do you think that our graduates what thing differentiates our graduates from the other graduates, like the students who get graduated from do engineering, or will do bachelors from FAST, or they will be different from the graduates from the other universities? Yeah, thank you, Waqar. Actually, as far as FAST is concerned and CFD campus is concerned, the location matters. For the Chinniyot Faisalabad campus, we have a lot of opportunities for the textile engineering sector. There are a lot of industry, Saiawala Industrial Estate, Allama Iqbal Industrial Estate, and you know already that all the textile industry, the fiber industry is already there at Kurniawala, at Shahport. So Faisalabad actually the industrial hub. So first of all, the edge for the CFD campus is that. The second thing is that according to the curriculum, we are following the PEC prescribed curriculum, and we are rigorously following that curriculum. And for the facility, as far as the facilities are concerned, we have a lot of cutting edge technologies that we have in labs, and moreover, the curriculum we are following is the most advanced one, and all campuses of the FAST, it is the same curriculum. Moreover, the learning management system is very nice, and most of the other universities don't have such setup, and ultimately that affects the students. Moreover, the extracurricular activities are there. So as far as if I do compare with other universities, FAST has the benefit that it's an old institute having world-renowned scholars that are doing job all over the world. So it's a great advantage to the graduates, and currently and future also. Thank you. Thank you so much, Dr. Shoaib, for thank you so much, Dr. Shoaib, for explaining that what differentiates our graduate from the other universities. Coming forward, I would like to ask Dr. Gufran that what are the activities available for our students, because study is not just the only thing that engineers must do. In fact, our engineers are very active in other activities as well. I would like to ask to shed light on this, and also about the professional activities which we do for these students. So I would like to ask Dr. Gufran to answer about these. This is very important question. मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे कैंपस में बहुत सी सोसाइटीज अवेलेबल हैं फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें ड्रामेटिक सोसाइटी है, जिसमें डिबेटिंग सोसाइटी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, उनके लिए भी सोसाइटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक स्पेशल सोसाइटी जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करना पसंद करते हैं, वो है IEEE. IEEE is Institute of Electrical and Electronics Engineers. It's an international society जिसके thousands of members हैं throughout the world. उसकी एक स्टूडेंट ब्रांच है, वो हमने यहाँ पे कैंपस में बनाई हुई है। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सोशल एक्टिविटीज भी होती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी होती हैं, और इसी तरह से हम इसमें स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह अरेंज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स भी अरेंज करते हैं। तो ये काफ़ी एक स्टूडेंट के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है इसमें।
और जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं उसमें वो लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो भी उनमें डेवलप होती हैं। उनके अपनी सोसाइटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरी वगैरह। तो ये सारे जब स्टूडेंट्स जो हैं इसमें से गो थ्रू करते हैं इस सोसाइटी में से, तो उससे उनकी बड़ी ग्रूमिंग होती है। तो आई थिंक आई रियली इनकरेज स्टूडेंट्स टू ज्वाइन सच सोसाइटीज। तो इस तरह की बहुत सी एम्पल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान। बिल्कुल, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। मतलब जितने आप लोग ज्वाइन नहीं इतनी कर सकते, इतनी ज़्यादा है, जस्ट फॉर कि आपकी जो लाइफ का जो पार्ट है, इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, आप ग्रूमिंग होती है, बीइंग बिकमिंग योर लाइफ पार्ट है ये। और ख़ास तौर पे IEEE के, एज फार एज आई रिमेंबर, डॉक्टर गुफरान इंचार्ज भी हैं, हेड भी हैं फैसलाबाद सेक्शन के। इज इट राइट डॉक्टर गुफरान? जी जी जी, वी हैव फॉर्म्ड ट्रिपली फैसलाबाद सबसेक्शन। तो ये भी फैसलाबाद के लिए बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पे हमने एक IEEE का जो है फैसलाबाद सबसेक्शन ओपन किया है, जिसमें हम कोलैबोरेशन है विद अदर यूनिवर्सिटीज एंड आल्सो विद द फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम इवेंट्स अरेंज कर रहे हैं। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जी बिल्कुल। तो अब आपने देख लिया कि ये सिर्फ यहाँ हम आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बातें भी बताएंगे, बल्कि इसके अलावा आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी होगी। अब इसके बाद आगे आते हैं कुछ और बातों की तरफ। स्पेशली मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि आप सारे के सारे मतलब यू आर कमिंग एज ए स्टूडेंट और यू आर पेइंग। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि फास्ट की स्कॉलरशिप्स हैं और फाइनेंशियल एड। ये डॉक्टर अगर आदिल जुल्फकार इस बारे में जवाब देना चाहें, फाइनेंशियल एड और जो या स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है, या स्टूडेंट्स को कोई स्टाइपेंड दिए जाते हैं स्पेसिफिकली? जी वकार बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके आंसर का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि अगर जो भी स्टूडेंट आता है स्टडी के लिए तो मेन कंसर्न यही होता है कि इस यूनिवर्सिटी के जो फीस है वो कैसे पे करे, इतनी ज़्यादा फीस है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी टू नो दैट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड टू इट्स स्टूडेंट्स, जिसमें जो फाइनेंशियल एड स्टूडेंट्स को अप टू 100% फी वेवर हो जाती है, और उसमें स्टूडेंट फॉर 4 years विदाउट पेइंग एनी फी वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है। और आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो स्टूडेंट्स डिसाइड करता है कि वो रीपे करे, किस फॉर्म में करे। ठीक है। दूसरा ये है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी बैचलर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, और हर साल मेरिट डिफरेंट होता है। तो उसमें इसके अलावा जो पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप्स हैं वो भी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। इसके अलावा एमएस और अगर पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो एचईसी स्कॉलरशिप जो है वो भी बेसिकली एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मेरिट। ठीक है। इसके अलावा स्टडी लोन भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट अगर वो आधी फी पे करते हैं और आधी लोन ले लेते हैं तो फिर वो इंटरेस्ट फ्री बेसिकली बहुत कम उनको वापस करना पड़ता है ईच मंथ। इसके अलावा असिस्टेंटशिप्स होती हैं कि स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर लेता है फास्ट को, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो वो आफ्टर 2 to 3 सेमेस्टर जब वो थोड़ा सा ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद उसको पेड टीचिंग असिस्टेंटशिप्स मिल जाती है इन एवरी सेमेस्टर, जिसके अंदर उसने क्विजेज होगी, असाइनमेंट्स होगी, ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ग्रेड करनी है, फिर उसके बाद टीचर के साथ कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह में हेल्प कर रही है। ठीक है। इसी तरह अगर हम एमएस की बात करें जिसमें पेड रिसर्च असिस्टेंटशिप्स मिल जाती है, तो इस तरह के डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है अपने इनकमिंग स्टूडेंट्स को। जी थैंक यू डॉक्टर आदिल। बिल्कुल जी, फास्ट किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो कि मेरिट पर है और इफ दे रियली कैन नॉट कवर, दे कैन ट्राई टू आस्क फॉर फाइनेंशियल एड, और उसका पूरी एक कमेटी होती है और वो फैसला करती है कि स्टूडेंट्स को दी जाए। लेकिन इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट्स के अलावा बाकायदा असिस्टेंटशिप्स भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंटशिप्स होती है कि स्टूडेंट सर्व करते हैं डिफरेंट किस्म के इवेंट्स के अंदर। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये खूबिया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीएफडी कैंपस की, कि अगर जो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट जो है फीमेल हो या मेल हो, वो अगर उसका मेरिट अच्छा बन रहा है, वो सिर्फ एक फैक्टर फी पे की वजह से वो नहीं पढ़ सका, तो फास्ट इसमें फुली हेल्प करता है उन स्टूडेंट्स की
कि आए हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, ताकि वो स्टूडेंट भी अपने जो ख्वाब उसने देखे होंगे वो पूरे कर सके। जी थैंक यू सो मच। लेकिन दोबारा ये बता दें कि इफ यू कंपेयर फास्ट फी विद द अदर यूनिवर्सिटीज यू विल फाइंड इट यू नो नॉट एक्सपेंसिव। इट्स नॉट द केस, हम यहाँ डिस्कस नहीं करना, लेकिन स्टिल यू कैन जज बेटर। स्टिल फास्ट इज नॉट फास्ट सिर्फ यू नो इट्स नॉट अबाउट मनी मेकिंग थिंग। सो आप फाइनेंशियल एड मिल सकती है आपको। इसके अलावा इट्स वेरिएबल, इट्स कैन बी 100, 50%, 20% ऑल्सो। इसके अलावा आप टीए शिप्स स्टिल एवरी सेमेस्टर हर एक टीचर टीए रखता है और उसको डिपार्टमेंट पे करता है टीए को। सो यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू अर्न लाइक दिस। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कैंपस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, ख़ासतौर पे डॉक्टर गुफरान से, कि वो बताना चाहें कि अगर स्टूडेंट्स कोई दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम लाइक मुल्तान और बहावलपुर और इस तरह रहीम यार खान से या इस तरह के इलाकों से, तो कैंपस उनको कैसे सपोर्ट करता है, या गर्ल्स आना चाह रही हैं इस तरह के इलाकों से दूर दराज से जो फैसलाबाद में नहीं है, तो उनको कैसे डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, और क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हमारे इस वक्त कैंपस के अंदर? जी बिल्कुल जी, हमारे यहाँ पे कैंपस के अंदर एक बड़ा एक पर्पस बिल्ट हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल में मोर देन 500 स्टूडेंट्स के कैपेसिटी मौजूद है, और उसमें जो नए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं हमेशा कि इनको जो है वो हॉस्टल में प्लेस जो है वो मिलनी चाहिए। तो डेफिनेटली वी विल बी प्रोवाइडिंग सच अपॉर्चुनिटीज टू हॉस्टल फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स। इस तरह फीमेल स्टूडेंट्स के भी हमारे पास हॉस्टल्स मौजूद हैं, तो उनको भी हम हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे पास कैंपस में ग्राउंड्स हैं बहुत बड़े बड़े। अगर आप रनिंग करते हैं तो शायद एक दिन में खत्म ना कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तो हमारे पास जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कैंपस के अंदर। उसमें ग्राउंड्स हैं, ये फुटबॉल, वॉलीबॉल, उसमें टेबल टेनिस वगैरह जो और इंडोर गेम्स की भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं। अभी हमने एक जिम एस्टेब्लिश किया है स्टूडेंट्स के लिए। और टेनिस कोर्ट इन मेकिंग। बिल्कुल, टेनिस कोर्ट भी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एक लाइब्रेरी है जिसमें स्टूडेंट्स आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा बिल्कुल, क्योंकि हम खाने पीने की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और इसके अलावा डिफरेंट हॉस्टल के अंदर भी, इसके अलावा कैफ़े है बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, और इसके अलावा एक देसी ढाबा भी है जो कि बिल्कुल आप बैठ के शाम को, रात को या दोपहर को बैठ के एक ढाबे के असर करिए, तो इट्स एन एनवायरनमेंट कि जिसके अंदर आपको ये नहीं महसूस होगा कि भाई आप इवन यू नो किसी इसी तरह लगे जिस तरह आप गपशप के बीच में एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, स्किल सेट भी, और अपनी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। सो ये जो इन्वायरमेंट है आपको आप विजिट ज़रूर करें। मैं ये ज़रूर चाहूँगा आप जब एक दफ़ा विजिट करेंगे, डू विजिट आवर लैब्स। लैब्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप खुद जानते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट, और हमारे पास सारा स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है जिसको हम हर सेमेस्टर में अपडेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे वकार साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस स्टेज पे जो है स्टूडेंट्स समटाइम्स उनके जहन में क्वेश्चन होता है कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, किस तरह की फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इस पे मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनको हैंड्स ऑन चीज़ों जो है करने उनको ज़्यादा पसंद है, या वो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इस तरह की चीज़ों को अगर वो पसंद करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इस तरह की उनका माइंडसेट है, एनालिटिकल स्किल्स उनकी अच्छी हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है और इसकी आगे स्पेशलाइजेशंस जो हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और पावर इंजीनियरिंग है, और इसी तरह से जो दूसरे हमने 2 नए प्रोग्राम है, बीएस रोबोटिक्स है और बीएस इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारे प्रोग्राम जो हैं इनमें आपकी हैंड्स ऑन स्किल्स और क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो आल्सो जो चाहते हैं कि बाद में अपने कोई बिजनेस वेंचर्स करना चाहते हैं, कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा एक जो है वो आइडियल प्रोग्राम्स हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अबाउट डॉक्टर गुफरान अबाउट गिविंग देम दिस अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा आप देखें कि बेसिकली ये प्रोग्राम जो है ये हमने इसी तरह डिज़ाइन किए हैं कि यू मस्ट बी रेडी फॉर द जॉब इमीडिएटली आफ्टर योर डिग्री। बिकॉज बल्कि हमारे स्टूडेंट्स अभी भी जो ये बैच ग्रेजुएट हो रहा है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी जॉब पे लग चुके हैं। और इसके अलावा हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सारे के सारी फैकल्टी। वी वर्क फॉर द जॉब्स फॉर ऑफ द स्टूडेंट्स, ना सिर्फ इसमें तो पाकिस्तान में। मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि हम इंटर्नशिप्स जो है उस पर बहुत स्ट्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को। हम इंटर्नशिप्स में फैसिलिटेट करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स समर में इंटर्नशिप करते हैं फॉर 2 मंथ्स, और इसको भी हम इनकरेज करते हैं। फिर हम जो उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसमें हम उनके लिए हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि वो इंडस्ट्री के साथ उनकी अफिलिएशन हो, कोलैबोरेशन हो। तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट को ग्रेजुएट करने से पहले इंडस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट है उसका जो है इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, और वहां से उनके लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो क्रिएट हो। बिल्कुल। और इसके अलावा हम उनको बाकायदा हायर एजुकेशन के लिए इफ समवन वांट्स टू वी फुली सपोर्ट देम, टोटली सपोर्ट देम। और उनको मतलब हमारे लिए हमारे ग्रेजुएट्स बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे बच्चे हैं। एंड वी टोटली इट्स लाइक एनवायरनमेंट, एवरी टीचर इज ऑफिस इज ओपन, यू कैन विजिट एनी टाइम। बल्कि अभी भी जब आप आएँ तो ज़रूर विजिट करें हमारे ऑफिस को। और कोई भी सवाल हैं आपके हमारे ज़रूर पूछें, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि 30 जून डेडलाइन है। आपके रिजल्ट्स नहीं भी आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ स्पेशली हाउ विल मेरिट बी कैलकुलेटेड। आई थिंक ये पहले भी आई थिंक ये वेबसाइट पे उनको दे चुके हैं आंसर, यू हैव रेड अबाउट द वेबसाइट। लेकिन अगर आप में से कोई बताना चाहे कि मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस बार। जी वकार बेग साहब, इस दफ़ा जो मेरिट कैलकुलेट होगा वो बेसिकली अगर फास्ट वो जो स्टूडेंट कैंडिडेट है फास्ट का टेस्ट देना चाहता है तो 50% उसमें से काउंट होंगे फास्ट के टेस्ट में से, और 50% उसके जिसमें भी हायर परसेंटेज होगी एसएससी रिजल्ट में या एचएसएससी रिजल्ट में, उसमें काउंट जो जिसमें भी हायर परसेंटेज होगी उसका 50% उसमें से काउंट किया जाएगा। या अगर किसी स्टूडेंट के पास एनटीएस का एग्जाम है तो वो एनटीएस के जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कंसीडर होंगे कि एनटीएस अगर 50% पे पास है तो वो कंसीडर होंगे। या इसी तरह जैसे डॉक्टर गुफरान साहब ने बताया था, अगर किसी के पास सेट का एग्जाम है तो सेट 1 का एग्जामिनेशन है तो उसके अंदर कंबाइंड स्कोर ऑफ 1000 या उससे ज़्यादा कंसीडर होंगे। तो इसी तरह अगर किसी के पास सेट 2 का एग्जाम है तो उसमें 550 एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए आपके पास। तो इसमें दो बातें अब आई होप क्लियर हो गई होंगी कि 50% आपका टेस्ट में होना चाहिए और 50% आपका जो आप रिजल्ट जमा करवाएंगे आइदर एसएससी या एचएसएससी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आप बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, इसकी अच्छी तरह तैयारी करें एंड देन द मेरिट विल बी मेड। और इसके अलावा फर्दर लिस्ट भी लगती है, आई थिंक सेकंड मेरिट लिस्ट भी लगती है। तो यू कैन हैव द चांस कि आप अगर वाकई मोटिवेटेड हैं और मेरिट पर हैं तो यू विल गेट एडमिशन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द टेस्ट पैटर्न। इसके बारे में मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। जो टेस्ट पैटर्न है जो हमारा डबल ई का, तो इंग्लिश 10% होगा इसके अंदर, और एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू जो है वो 20% होगा, और बेसिक और एडवांस मैथ ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 70% होगा। तो ये आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ये टेस्ट पैटर्न दिया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट के देयर विल बी अनदर टेस्ट आफ्टर एफएससी एग्जाम के। अभी जो टेस्ट हो रहा है तो स्टूडेंट को क्या दोबारा तो नहीं टेस्ट में बिठाएंगे कि अगर उसने एफएससी कर ली है और उसके मतलब रिक्वायर्ड जो हमारे मार्क्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने पूरा कर लिया या वो ए लेवल्स का उसका रिजल्ट्स आ गए हैं, तो कहीं हम उसका दोबारा तो नहीं टेस्ट लेंगे जो पहले ले चुके हैं उसके अलावा? नहीं जी, दोबारा टेस्ट नहीं होगा। बस जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर वो मीट कर जाएंगे तो फिर दोबारा टेस्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल, दोबारा टेस्ट नहीं होगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिजल्ट सबमिट करवाना पड़ेगा, लेकिन
उसका दोबारा टेस्ट नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए हम उनका रिजल्ट जरूर वो लेते हैं जब वो कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मेरिट क्राइटेरिया फॉर द गैप ईयर स्टूडेंट्स हु हैव देयर ऑन एफएससी रिजल्ट्स। बिल्कुल जी, इसका मैं थोड़ा सा आंसर दूं। अगर आपके पास एफएससी का रिजल्ट है, चाहे गैप ईयर भी आप जमा करवाएं, आप अप्लाई करें, अगर आप टेस्ट दें, अगर और या अगर आपके पास और एनटीएस या उसका भी जो है अगर दिया हुआ है तो वो दे दें, और अगर आप मेरिट पर हुए तो यू विल बी सिलेक्टेड। इफ समवन वांट टू ऐड इन इट। बिल्कुल जी, ठीक है आपने कि अगर किसी के पास पुराना भी एफएससी का रिजल्ट है तो वो भी उसी तरह से 50% उसकी वेटेज काउंट होगी। अगर किसी के पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, उसके फर्स्ट ईयर की 50% काउंट होगी। अगर किसी के पास सिर्फ मैट्रिक का है, ड्यू टू कोविड-19 वो अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया उसके बाद, तो उसकी मैट्रिक की 50% वेटेज काउंट हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये मेरिट ओवरऑल होता है, इसके अंदर हम कोई नहीं कंसीडर करते गैप ईयर, ना कोई इसका होता है, आपके सिर्फ मार्क्स वगैरह काउंट किए जाते हैं जो आपके हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि इन एनटीएस यू विल कंसीडर स्टूडेंट स्कोर या परसेंटाइल। तो ऑब्वियसली इट्स स्कोर, बिल्कुल जी, ये स्कोर काउंट किया जाएगा, आपके परसेंटाइल नहीं इसके अंदर काउंट होगा। और ये क्वेश्चन है, बिल्कुल जी, हम जब मास्टर्स और पीएचडी के एडमिशन अभी नहीं ओपन, जैसे वो ओपन होंगे वी विल डू अनदर सेशन, लेकिन अभी अगर बताना चाहें कि अबाउट पीएचडी एडमिशन, इफ समवन वांट्स टू एक्सप्लेन अबाउट पीएचडी एडमिशन जो कि अपकमिंग है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल जी, पीएचडी एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो आप हमारी वेबसाइट से देख लें। उसमें टेस्ट जो है वो एनटीएस गेट का टेस्ट जो है वो पास करना जो है लाजमी है। वो रिक्वायरमेंट्स आप वेबसाइट से देख लें। तो मीनवाइल जब तक हमारा एडमिशन ओपन नहीं होता, सो यू कैन टेक दैट टेस्ट सो दैट यू फुलफिल द क्राइटेरिया। जी बिल्कुल, अभी जब तक ओपन नहीं होता तो देख इस पॉसिबिलिटी का चेंज भी हो, बट करंटली जो पीएचडी का क्राइटेरिया यही है कि यू मस्ट हैव पास वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया कि आपने गेट सब्जेक्ट टेस्ट एटलीस्ट 60% अबव पास किया हो, एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है अच्छा, बिल्कुल जी, क्वेश्चन है गाइड द अपकमिंग स्टूडेंट्स अबाउट द सेमेस्टर सिस्टम एज न्यू स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग देमसेल्व्स इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। बिल्कुल जी, ये सेमेस्टर सिस्टम इटसेल्फ एक थोड़ा सा खास तौर पे कोविड के बाद एक सेमेस्टर सिस्टम है ना, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम इटसेल्फ एक बड़ा रिगोरस सिस्टम है, और फास्ट का जो सेमेस्टर सिस्टम है वो थोड़ा सा बाकी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट है, बिकॉज वी हैव 2 मिड्स एंड 1 फाइनल, और ये इस तरह का सिस्टम है। नॉर्मली जब मैंने भी शुरू में ज्वाइन किया तो हमें भी कहा गया कि इसके अंदर जो फेल होना चाहता है सिर्फ वही फेल। व्हेन वी स्टार्टेड, हमारे एक्सपीरियंस का, बिलीव मी, ये वाकई ऐसा सिस्टम है कि जो वाकई नहीं मेहनत कर रहा वो इसके अंदर से हो जाता है। तो अगर आप में से कोई इसके बारे में और एक्सप्लेन करना चाहे जो फास्ट सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। जी, डॉक्टर आदिल, आप अगर बात करना चाहें। जी वकार बेग साहब, जो फास्ट का सेमेस्टर सिस्टम है वो बड़ा बेसिकली फ्लेक्सिबल है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, जिसमें ईच लेक्चर और ईच डे में स्टूडेंट को इंगेज किया जाता है, स्टूडेंट को चीज़ें पता होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करता है अपनी चीज़ों को। इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। जैसे आपने कहा, अगर स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ेगा, खुद नहीं पास होना चाहेगा, तो फिर उसको कोई भी पास नहीं कर सकता। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसमें टीचर्स ऑलवेज अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, और स्टूडेंट को साथ लेकर चलते हैं। तो इसमें अगर स्टूडेंट मेहनत करेगा तो उसमें उसको इतनी डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा। जिस स्टूडेंट ने मेहनत नहीं करनी तो फिर उसको जाहिर बात है डिफिकल्टी आएगी बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, इसी तरह है कि फास्ट का सिस्टम खास तौर पे अब ओबी है, ये आपको ज़रूर बताएं। ओबी आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड का पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये बेसिकली सिस्टम ही ऐसा है जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर आर ऑन द सेम पेज। इसके अंदर जो भी आपने तैयारी की है, लिखा है, एग्जैक्टली वो मार्क होगा, और उसके अंदर टीचर आपको एग्जैक्टली बता भी रहा है कि किस किस चीज़ के क्या मार्क्स हैं, और ये सिस्टम इटसेल्फ आपकी क्वालिटी के लिए। और बिलीव मी, अब ये सिस्टम होलिस्टिक है, इट्स नॉट जस्ट वन सेमेस्टर। हम अब आपको देख रहे हैं
ऑल द 8 सेमेस्टर्स हम देखते हैं कि आपने किस हद तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोग्राम के, हमारा इंजीनियर जो है वो स्किल सेट और जो बाकी क्वालिटीज हैं जो डिफाइन की हुई हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं। तो हम एक कोर्स को नहीं देख रहे, अब हम ओवरऑल देखें कि अच्छा यार इस कोर्स में इसने स्टूडेंट की ये कारकर्दगी है तो इसको अच्छा आगे करना चाहिए परफॉर्म। इसके साथ हम स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग भी करते हैं जो आफ्टर द एंड ऑफ सेमेस्टर। और ऑब्वियसली overall the semester it's not about no CGPA, it's about your OB evaluation, that how many factors you have included in your profile. और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं आई थिंक पहले भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी, कैन यू टेल मी देयर आर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स who cannot come due to pandemic? I think आप सेट के लिए जा सकते हैं as far as I know. जी नहीं, ऑनलाइन टेस्ट हमारा अपना जो टेस्ट है वो तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑन कैंपस ही है। इसमें जो आपने सेट का कहा है वो एक लेकिन ऑप्शन, आप सेट के रिजल्ट्स के लिए जा सकते हैं। जी साहब शायद करेक्ट हैं। मैं थोड़ी देर आपको VS रोबोटिक्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि VS रोबोटिक्स का जो प्रोग्राम है ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चारों फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज हम इसमें ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें हम डिज़ाइन सिखाते हैं, जैसे ऑटोनोमस रोबोट्स हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं। इसका आजकल जो है वो आपने बड़ा देखा होगा कि एक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा है उसमें ऑटोनोमस व्हीकल्स जो है और ऑटोनोमस मशीन्स की तरफ हम मूव हो रहे हैं। मेडिकल रोबोट्स हैं, जो इवन के मेडिकल रोबोट्स ऐसे हैं जो रिमोट सर्जरीज जो है वो कर सकते हैं। इस तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन रोवर्स आपने देखे होंगे, सो जिसमें हम यहाँ से बैठ के जो है वो स्पेस व्हीकल्स जो है वो कंट्रोल हो रही हैं। So these shows the trends के फ्यूचर में जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो उनका जो है वो रिक्वायरमेंट होगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स जो हैं किस एरिया में जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी फ्यूचर में। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये जो प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किए हैं। फास्ट जो है हमेशा से एक बड़ी डायनामिक अप्रोच रही है फास्ट की, कि हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखते हुए अपने जो है नए प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करते हैं। इसमें रिसेंटली BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम जो है वो भी हम ऑफर करने जा रहे हैं। कुछ कैंपसेस में लास्ट ईयर हमने ऑफर किया था BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे कैंपस में होगा। और ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है, BS रोबोटिक्स, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BS इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं उनको ये प्रोग्राम जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। तो हमारी ऑलरेडी डिपार्टमेंट में रिसर्च इन एरियाज में हो रही है। हमारे स्टूडेंट जो हैं रोबोट बड़े अच्छे जो हैं रोबोट्स बनाते हैं। हर साल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ऑटोनोमस रोबोट्स। और इसी तरह से इस दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सोलर कार्स जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें सोलर एनर्जी को यूज़ करके उन्होंने व्हीकल्स जो है वो बनाई हैं। So the trend is obvious, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास कोर्सेज और प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इस तरह BS इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसके बारे में बताऊंगा कि अभी आपने देखा होगा कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हर चीज़ जो है वो we are moving our systems towards digitalization। उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो एरिया है ये बहुत उसमें उसका की रोल है। तो ये इसलिए हम ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, ये जो स्किल गैप मौजूद है, ये जो कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं या वो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों की जो स्किल्स हैं ये उस गैप जो है वो एक मौजूद होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं
उनमें और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स में जो स्किल्स का एक थोड़ा सा गैप आता है कि दोनों को एक ऐसा एक प्रोग्राम एक ऑफर किया है जिसपे दोनों फील्ड्स जो हैं उसका नॉलेज लोगों को हो। तो ऐसी जो 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 स्किल्स हैं वो हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोग्राम में सिखाएंगे, जिसमें हार्डवेयर का नॉलेज भी होगा और इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो इसमें भी शामिल होगा। तो आई थिंक कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो स्किल्स का गैप इस वक्त मौजूद है मार्केट में, ये उसको एड्रेस करेंगे। जी थैंक यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं ऑन कैंपस नहीं, मैं घर चला गया तो सम इंटरप्शन, बट ओके। जस्ट आई वांट टू से थैंक यू टू राना अफान, ही इज आवर स्टूडेंट एंड डूइंग जॉब। So thank you Afan for the comments. Yes, you are one of the good students in our department, and I think you are doing job in solar, I think some industry. So thank you so much, Dr. Gufran, Dr. Shoaib and Dr. Adil. This was I hope आप स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में, जो प्रोग्राम स्पेशली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑफर कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इसके अलावा बैचलर BS इन IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, एंड बैचलर इन रोबोटिक्स। तो आपको हमने आज कोशिश की कि आपको इन प्रोग्राम्स के जो न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं और फास्ट स्पेसिफिकली इनिशिएटिव ले रही है इन प्रोग्राम्स को लॉन्च करने का, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि हम खास तौर पे, जैसा कि डॉक्टर शुएब ने आपको बताया कि हम इस वक्त इंडस्ट्रियल हब में बैठे हैं, और अगर बीइंग एन इंजीनियर ये हमारा फर्ज है कि हम इन प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर उनको सॉल्व करें। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी वर्क फोर्स प्रोड्यूस करें जो कि ना सिर्फ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इस तरह के सॉल्यूशंस को, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सके। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो ना सिर्फ जॉब्स करें, बल्कि अगर वो हायर स्टडीज के लिए बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट करें। और इसके लिए ये नहीं कि हमने सिर्फ उनको इस तरह सपोर्ट किया, जिस तरह आपने सुना कि हमारा इन्वायरमेंट जो है डिपार्टमेंटल और यूनिवर्सिटी का कैंपस का जो है वो इस तरह का है कि ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, और इसके अलावा आपके पास चांसेस होंगे कि आप कैंपस के अंदर इजीली अपने आप को क्या कहते हैं, यहाँ आकर जो इन्वायरमेंट मिले वो ऐसा ही हो कि आप ये ना महसूस करें कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर है पढ़ाई का, या काइंड ऑफ दिस। फास्ट इज वेरी, यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसने डॉक्टर आदिल ने कहा कि बिल्कुल यहाँ हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है हम यहाँ पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को, और OB सिस्टम भी इसीलिए। और 30 जून डेडलाइन है, प्लीज़ अप्लाई करें, हमें विजिट ज़रूर करें। टीचर्स आर अवेलेबल इन द कैंपस, आप आएँ, जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे पूछें, और ये ज़रूर फैसला करें कि जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकते हैं। आज हमने यही कोशिश की है कि आपको इनकी अहमियत के बारे में बता सकें और आपको इसके बारे में कुछ आगाह कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप ईमेल भी कर सकते हैं, ये इसी जो लाइव सेशन इसके साथ आपको इसके जो है इसके अंदर आपको दिया गया होगा जो ईमेल एड्रेस है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। So any last words अगर आप कहना चाहें डॉक्टर गुफरान, and then we will end this session. Okay, so I just want to strongly encourage everyone that please visit us and see our infrastructures and labs, interact with our faculty, and if you need some career counseling, we are available. So you are most welcome to be here, and I hope you will join FAST and be part of this FAST family, and will have opportunity to learn and to grow with us. जी थैंक यू एवरीवन। आप सब स्टूडेंट्स का जो हमें सुन रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन, उन सब का शुक्रिया, और थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मोहम्मद शुएब एंड डॉक्टर गुफरान। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, Bakar. Allah Thank Hafiz. you.